तो आज हम शुरू करने वाले हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो प्रूफ, लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन द कैरेक्टरिस्टिक polynomial of A equals to psi A of x, और psi A of x equals to determinant of A minus x into in, मतलब कि आइडेंटिटी। ओके, सो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विल बी c0 x to the power n plus c1 x to the power n minus 1 plus dot 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 cn minus 1 into x plus cn. Say we suppose that this is the characteristic polynomial of A. Here A minus x into in is a metric polynomial in x of degree 1। यहाँ पर a माइनस एक्स इंटू आई एन जो है वो एक मेट्रिक पॉलिनोमियल है x में 1 डिग्री का। ओके, सो द एडजॉइंट ऑफ a माइनस एक्स इंटू आई एन इज ए मेट्रिक पॉलिनोमियल, एक मेट्रिक पॉलिनोमियल है इन x ऑफ डिग्री क्या होगा, इन माइनस 1। नाउ लेट एडजॉइंट ऑफ a माइनस एक्स इंटू आई एन इक्वल्स टू b0 x to the power n minus 1 प्लस b1 x to the power n minus 2 प्लस डॉट 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 b n minus 2 इंटू एक्स प्लस b n minus 1। सो हमने एडजॉइंट ऑफ a माइनस एक्स इंटू आई एन को b0 x to the power n minus 1 प्लस b1 x to the power n minus 2 प्लस डॉट डॉट b n minus 2 इंटू एक्स प्लस b n minus 1 ले लिया है। ओके, जहां पर bi is an n cross n matrix for I equals to 0 1 2 dot 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 n minus 1। okay, now a into x into in into adjoint of a माइनस एक्स इंटू आई एन, मतलब कि 1 डिग्री मैट्रिक पॉलिनोमियल और n माइनस 1 डिग्री मैट्रिक पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स इंटू आई एन इंटू आई एन। ओके, आई एन मतलब आइडेंटिटी ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स। ओके, दिस इम्प्लाई a माइनस एक्स इंटू आई एन इंटू, now what is adjoint of a minus x into in, that is b0 x to the power n minus 1 plus b1 x to the power n minus 1 plus dot 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 b n minus 2 into x plus b n minus 1। so b0 x to the power n minus 1 plus b1 x to the power n minus 2 plus dot 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 b n minus 2 into x plus b n minus 1, this is equals to determinant of a minus x into in into in। so determinant of a minus x into in is c0 x to the power n plus c1 x to the power n minus 1 plus dot 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 plus cn minus 1 into x plus cn। अभी इसके साथ आइडेंटिटी in जो है वो मल्टीप्लाई है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू cn in इक्वल्स टू a इंटू b n माइनस 1। सो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन के दोनों तरफ के टर्म को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं cn इंटू आई एन, मतलब कि 1 का जो कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल्स टू a इंटू बी एन माइनस 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 1 का कोफिशिएंट है a इंटू बी एन माइनस 1 एंड राइट हैंड साइड पे 1 का कोफिशिएंट है cn इंटू आई एन। ओके, नाउ cn माइनस 1 इंटू आई एन
दिस इज इक्वल्स टू सी एन माइनस वन इंटू आई एन, मतलब कि एक्स का जो कोफिशियंट है दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स का जो कोफिशियंट होगा उससे इक्वल होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स का कोफिशियंट है ए इंटू बी एन माइनस टू माइनस बी एन माइनस वन। आप देख सकते हैं कि ए इंटू बी एन माइनस टू जो है एक्स का कोफिशियंट है एंड एक्स इंटू आई एन इंटू बी एन माइनस वन। सो इधर भी बी एन माइनस वन जो है वो एक्स का कोफिशियंट है। सो डॉट 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 सी वन आई एन इक्वल्स टू ए बी जीरो माइनस बी वन, वैसे ही एंड सी जीरो आई एन इक्वल्स टू माइनस बी जीरो। ओके, नाउ सी जीरो ए टू द पावर एन प्लस सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस सी एन माइनस वन इंटू ए प्लस सी एन इंटू आई एन इक्वल्स टू माइनस ए टू द पावर एन बी जीरो। ओके, प्लस ए टू द पावर एन बी जीरो माइनस ए टू द पावर एन माइनस वन बी वन प्लस डॉट 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 प्लस ए स्क्वायर बी टू प्लस ए स्क्वायर बी एन माइनस टू माइनस ए इंटू बी एन माइनस वन प्लस ए इंटू बी एन माइनस वन। दिस इज इक्वल्स टू जीरो क्योंकि all of these terms will be cancelled with each other, so this is equals to 0. Therefore psi a of a equals to 0। और हमें यही दिखाना था कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और हमने दिखा दिया psi a इक्वल्स टू 0 जहां पर a इज ए रूट ऑफ psi a of a equals to 0। Hence the theorem